यप, आई वाज करेक्ट कि मैं म्यूट हूँ। मैं इतनी देर से बड़बड़ कर रहा हूँ पर मैंने बोला कि मैं म्यूट हूँ। क्या बोला मैंने इतनी देर से कि फिल्टर कैसे हटाना है, और थोड़ा देर रुक जाओ बताऊंगा किस बारे में बात कर रहे हैं। फिल्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगा रहा, अपन लगाएंगे ये वाला फिल्टर। दिस वन इज गुड, दिस वन इज बैड, दिस वन इज बेटर देन दैट। या आई आल्सो थिंक दैट। चलो, यहाँ पे दोबारा से वो आ गया, एको हो गया। नाइस। आई आल्सो थिंक ये वाला बेटर था, ये वाला बेटर था। बस 2 मिनट रुक जाओ। अरे यार, एक तो ये थोड़ा सा वो होता है ना लाइट, मैं एक जगह टिक नहीं पाती। इसका भी अपने इलाज है, तो जो करते हैं इसका इलाज भी करते हैं। वीडियो कहाँ गई? ये रही। एडजस्ट फॉलो लाइट मैनुअल। ठीक है, अपन को चाहिए डार्क, अपन को चाहिए डार्क लोग, और इस पर फिक्स हो जाना चाहिए चीज़। ठीक है। सो या नो यार, लगता है वही वाला फिल्टर ठीक लगेगा मेरे को। लग रहा है मुझे ऐसा कि बार बार दिक्कत देगी लाइट, या तो मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ तो बेटर है, या तो इतना रखूँ तो बेटर है। आई गेस दिस वन इज बेटर। आई ऑल्सो डू वन थिंग, सामने दिखाने के लिए मैं फ़ोन को ऐसे रख लूँगा कि मेरे को दिखता भी रहे सब कुछ क्या चल रहा है चैट में। इवन आई नो कि है ना, चैट में घंटा कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है। सो व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट टुडे? सो वी गोना टॉक अबाउट दिस जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, द ब्लडी ट्रुथ अबाउट वैम्पायर्स। सो व्हाट हैपेंड यस्टरडे कि मैं रात में अराउंड 12 बजे, नींद नहीं आ रही थी एंड ऑल थिंग वाज हैपनिंग विद मी। सो ऐसे ही आई सोचा कि करो जरा सर्च करते हैं वेब के बारे में, पर रात के 1:30 बजे कर रहा था तो फट गई थी। सो आई डिसाइडेड कि इसको कंटिन्यू करेंगे हम सुबह। सो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको। मैं ये होगा, ये लिख भी रहा था ऐसे। आई वॉज राइटिंग समथिंग, मैं पूरी रिसर्च रिपोर्ट बना रहा था इस पर, बट देन आई डिसाइडेड कि अब सोचो लाइव ही करेंगे, फिर उसको ही कन्वर्ट कर दूंगा मैं रिपोर्ट में। मज़ा ज़्यादा आता है इससे। ऑल्सो बता दूं कि आई हैवेंट हैड माई लंच इधर ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। तो मेरा बगल में सब रेडी है, मेरा सब बगल में रेडी है। सो आई हैव दैट ऑन स्ट्रीम इटसेल्फ। थोड़ा थोड़ा सा बस आ रहा है। आई हैव दैट ऑन माई स्ट्रीम। गोवा ये लाइट को कुछ करना पड़ेगा, नार्स हो गया है। इसको एक बार लाइट को बंद कर चालू करता हूँ। दिस वन इज गुड, लाइट वन इज गुड। सो करे बात, किस बारे में बात करी जाए मुझे बताओ। इस बारे में करेंगे। सो बस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत नया ज्ञान खुद को ही मिलेगा। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मतलब वैम्पायर्स के बारे में जितना मुझे पता है उतना ही पता है। मेरे पे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट आई वुड लाइक टू हैव सम नाउ। So this article is on the National Geographic page, Planet Possible. The Bloody Truth About Vampires by Becky Little. You can follow him, Twitter, Facebook और मेल कर सकते हो. So what he wrote about it कि what he wrote about it actually कि vampires are fodder for books, movies and Halloween costume. मतलब fodder means कि है ना वो उसमें सिचुएट आई गेस हाँ तुमको पता है कि वो सिर्फ माने जाते हैं बुक्स और मूवीज और हेलोविन कॉस्ट्यूम्स में ही, but for hundred of years they were scapegoats for disease, space goats for disease. Let's hear about it. 9 minute read है, आराम से हो जाएगा. The traits of modern day vampires are pretty well established. They have fangs, drink human blood, and can't see themselves in mirrors. I didn't know about this one, but the two stereotypes about vampires I know about is that they have fangs and they do drink human blood. But I don't know about that कि they can't see themselves in mirrors. They can be ward off with a with of garlic or killed with a stake through the heart. I know about these things. Some like Dracula are aristocrats who live in castles. Maybe aristocrats means high and hierarchy wise, I guess. I don't know the proper meaning of this word.
A vampire didn't start out so clearly defined. Scholars suspect that the modern conception of these Halloween monsters evolved from various traditional beliefs that were held throughout Europe. Those beliefs centered around the fear of the dead once buried could still harm the living. It's more like an zombie type of thing when they say that the fear from the death once buried could still harm the living. Well, they still come back to harm them. Good. Often, these legends arose from misunderstanding of how bodies decompose. As a corpse skin shrinks, its teeth and fingernails can appear to have grown longer. And a great thing to notice, as shown in this photo, this is a 700-year-old skeleton from Kozopon, Bulgaria, was found with his teeth removed and stabbed through the heart with an iron rod. The scholars suspect that the townspeople did this to ward off vampires, a very real fear for Europe for years, right? So in Europe, there's a fear of vampires. We live in India, but we don't know about that much. We'll get to know about Europe thing in further. People and the Wow, planet need Jawaz कहाँ से आई? trees. Forests are central to solving the two biggest crises of our time, biodiversity अच्छा and यहाँ से आई extinction. आवाज. But 15 billion Thank you for the ad. National Geographic. So where are we? A dark purge fluid can leak out of the nose and mouth. People unfamiliar with this process will interpret in this fluid to the blood, suspect that the corpse have been drinking it from the living. See, there's a myth type of thing is there. जैसे कि इसमें बता रहे हैं as a corpse skin shrinks, its teeth and fingernails can appear to have grown longer. जैसे ही उनकी बॉडी श्रिंक करना चालू कर दिया एक बार डिकम्पोज होने के बाद, तो उनके जो टीथ होते हैं और उनके फिंगर नेल्स होते हैं वो अब दिखते हैं, बड़े होते नहीं है, वो दिखते हैं कि वो बड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी स्किन हट जाती है तो वो अंदर का दिखना चालू हो जाता है. And as internal organs break down, a dark purge fluid can leak out of the nose and mouth. This is also a good thing. सी नॉर्मल अगर आप किसी चीज़ को डिकम्पोज करोगे तो उसमें कुछ टाइप का लिक्विड निकलता है. इन अ बॉडी देयर आर लॉट ऑफ ब्लड एंड अदर टाइप ऑफ फ्लूइड्स. तो उसमें क्या होता है कि आपके जब ऑर्गन्स रिमूव वो होते हैं, डिकम कुछ भी ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका फ्लूइड निकलना चालू हो जाता है. डार्क पर्च फ्लूइड जो बोल रहे हैं इसमें. एंड उसके कुछ ही होते हैं वे निकलने की. आप डिकम्पोज होने के बाद आपका माउथ एंड नोज ही दो होता है क्योंकि आपका ब्रेन से भी हो रहा होगा एंड अदर थिंग्स, क्योंकि सारी वेन्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन से कनेक्ट होती हैं. So this is the one thing is there. People unfamiliar with this process will interpret this fluid to blood and suspect the corpse have been drinking from the living. ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा सबको. What's next? What's next? So bloody corpse weren't the only cause for suspicion. हाँ, क्योंकि देखो अगर कॉर्प बहुत ब्लडी है तो उसको सस्पेक्ट कर सकते हो कि वैम्पायरिज्म से आप ला सकते हो. But that was not the only cause. Before people understood how a certain disease spread, they sometimes imagined vampires were behind the unseen forces slowly raving the communities. The one constant in the revolution of vampire legend has been in close association with disease, writes Mark Colin Jennings in his book Vampire Forensics. Trying to kill vampires or prevent them from feeding was a way for people to feel as tough they had some control over disease. सो बैक देन जब पता नहीं था लोगों को ये एक डिसीज कैसे फैलती है, तो दे थॉट कि है ना ये वेम्पायर्स की वजह से होता है. एंड द वन कॉज रिवॉल्यूशन ऑफ वेम्पायर लेजेंड हैज बीन क्लोज विद डिसीज. ये लिखा था मार्क कॉलिन जेनिंग्स ने, जिनकी बुक है वेम्पायर फॉरेंसिक्स के ऊपर. सो ट्राइंग टू किल वेम्पायर्स और प्रिवेंट देम फ्रॉम फीडिंग the way was a way for people to feel as though they had some control over disease. Now the roots came back to vampires of Europe, where the all things begin, as they say, where everything begins for vampirism is in Europe. Hmm.
So because of this, the vampire scares tended to coincide with the outbreaks of the plague. In 2006, archaeologists unearthed a 16th century skull in Venice, Italy, that had been buried among plague victims with a brick in its mouth. The brick was likely a burial tactic to prevent strega, Italian vampires or witches. See, we all know about the witches from Salem, but we don't know our vampires from Europe, right? From leaving the grave to eat people. Not all vampires were thought to physically leave the grave. In northern Germany, the Nezer, or after divorce, after divorce, stayed in the ground, chewing on their burial shrouds. Again, this belief likely has to do with purged fluid, which could cause the shroud to sag or tear, creating the illusion that a corpse had been chewing it. These stationary massacres were still thought to cause trouble above ground and were also believed to the most active during outbreaks of plague. In the 1679 trait on a chewing death, a Protestant theologian accused that the Nazar of harming their surviving family members through occult processes. He wrote that people could stop them by exhuming the body and stuffing its mouth with soil and maybe a stone and a coin for good measure. Without the ability to chew, देखो इससे कुछ हमारी रिसर्च पे आगे बढ़ नहीं रहा है तो इसको स्किप करूंगा. जैसे बता रहा है कि पहले कैसे क्या करते थे लोग उस करने के प्रिवेंट. टेल्स ऑफ एम्पायर कंटिन्यूज टू फ्लोरिश एंड चार्ज बाय रीजन. ना आई गेस इसमें तो कुछ है नहीं. See, this is what I'm talking about. Still, anti-vampire efforts continued, and perhaps most surprisingly of all, one of the big vampire scars occurred in 19th century New England, 2 centuries after the infamous Salem witch trials. If you don't know about Salem witch trial, just read about it. You will be intimidated by that. You will love that. I'm saying that. Now, it is from the old world to the new. Exeter, Rhode Island, died of tuberculosis, then known as consumption. Her mother and sister were already dead, and her brother Edmund was sick. Concerned neighbors worried that one of the recently deceased brown women might be harming Edmund from the grave. When they opened Mercy's brown grave, they found blood in her mouth and her heart and took it to sign of vampirism. Good one. Though the neighbors burned Mercy's heart and believed mixed the aces into poison of Edmund to drink, a common anti-vampire tactic. The poison was meant to heal him. Instead, he died a few months later. This was an isolated incident. Folklorist and the Food for the Death author Michael Bale estimates that there are 60 known examples of anti-vampire rituals in 18th and 19th century New England, and several others elsewhere in the country. These rituals were more common in eastern Connecticut and western Rhode Island, says Brian Carroll, a history professor at Central Washington University, who is writing a book on the subject. He was writing on the book of the vampirism, I guess. Brian Carroll. So, according to the Food for the Death author Michael Bale, he estimated that the 60 या उससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल है एंटी वेम्पायर रिचुअल्स के 18 and 19th century इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड में. ठीक है. Carroll believes that the anti-vampire rituals were introduced as a medical procedure at the time of the American Revolution by German doctors who worked for the Hessian forces. Because of this, he thinks that the New England vampires were based on the German Nazar. I am not able to pronounce that. Unlike blood-sucking Romanian vampires, New England vampires stayed in their graves, harming the living through sympathetic magic from afar views. However, that will not connect with him with the vampirism. Still, they call it, so I will not say anything that. Bale, however, believes anti-vampire practice in England came from many places and that the suspected New England vampires
were actually more akin to Romanian vampires than the Nazar. Like Romanians, New Englanders were looking for liquid blood in the vital organs, not evidence of shroud chewing. He says the anti-vampire remedy of cutting the heart out, burning it out of the ashes, and giving the ashes to a sick person or sick people who were practiced in the Romania. So it was about vampirism. See, इसमें दिखाया हुआ है कि जो देखो मैंने बताया था कि इटली में किसी की ग्रेव में आपको मिला था ऐसा स्टोन या करा हुआ तो ये उसकी फोटो है. This 16th century skull was buried in Vins, Italy, with a brick in its mouth. The brick was likely meant to prevent the person from leaving the grave to eat people. तो दिस इज अबाउट वैम्पायरिज्म ऑन नेशनल ज्योग्राफिक. इससे ज़्यादा कुछ रिसर्च करना पता चला नहीं है, बट इतना पता चला है कि वी गॉट सम पॉइंट्स इन दिस. पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें कि है ना, कहाँ गया पॉइंट वो, कि हाँ दे रहा कहाँ गया, कि अकॉर्डिंग टू माइकल बेल 60 और से ज़्यादा भी क्या बोलते हैं ना एंटी वैम्पायरिज्म के वो है एग्जाम्पल्स हैं 18 और 19 सेंचुरी के न्यू इंग्लैंड में, जहाँ पे उनका कहना एक और चीज़ है कि थोड़ा डिफरेंट है वो. रोमेनियन वैम्पायर्स से इंग्लैंड वाले वैम्पायर्स तो डिफरेंट थे, ऑल्सो रोमेनियन वैम्पायर्स हैव टू केम आउट ऑफ देयर ग्रेव टू हंट पीपल. ऑन द अदर हैंड जो न्यू इंग्लैंडर्स के वैम्पायर्स थे, दे कैन डू सिंपैथेटिक मैजिक फ्रॉम अफार itself. Also we got something, see, everything is there in religions, so we might got something in the vampire folklore by regions in the religions, and we can say anything in that, but it's our region, not religion. Wow, that's confusing. As see Mesopotamia, so sorry, I Mesopotamia, Mesopotamia, sorry. Haha. So many cultures in ancient Mesopotamia has stories involve blood drinking demons. यार नेट की दिक्कत आ गई है, चल क्यों नहीं रहा.